Good evening to all learners. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening. So let us listen that block 3 contains rural development and agrarian issue. Rural development and agrarian issue. कृषि भित्तिक revolution and evolution. That considering the size of the country, the diversity, the long history of agrarian struggles and their inadequate documentation, it is too difficult that how to explain about the agrarian issue and agrarian revolution and agricultural. That is, agrarian revolution means agricultural revolutions. Due to lack of documentations and diversity, it is difficult to present and explain details about all agrarian movements in India. So how can we explain that sufficient documentations and records must be available? That since the administrations of Mughals and Britishers, that due to lack of and shortage of documentations, a large numbers of movement already completed, and diversity, विभिन्न प्रकार जाति वर्ण धर्म उपरे पर्यवेसित भारत वर्ष due to shortage and documentation, lack of documentations, absence of documentations, it is not easy to explain about the agrarian movement. This unit will give you a brief account of the key concept regarding the agrarian system, relationship between movement and change, the framework of the analysis of movement, and some of the basic concept of agrarianism. So, এই concept रे agrarian system रे तार relationship, तार change, framework, ए गुड़िक सबू केते प्रकार movement हेइची हम देश रे एवं से गुड़िक विशेषण भाव विशेष भाव रे हमें ताकू analysis करि परिबा. So the Indian agrarian system and agrarian classes. Agrarian movement do not take place in industrial or urban settings. सहरांचल किंबा कोनोसी शिल्पांचल रे agrarian movement देखा जाय न थाए. As we know, India is a country of villages where maximum people resides in village area. Those people, the farmers, depends on the agricultural sectors. Hence, due to lack of documentations, numbers of problems and movements already completed on cultivations. So, although they may draw support from sections of a population in these sectors, or many, or may even have alliance with them for achieving a larger political goals. Basically, these movements arise within agrarian system. The agrarian stated briefly is that pertaining to cultivated or agricultural land or tenure system related to cultivated land or its management and distribution. Jehetu the maximum people are resides below the poverty line in our country since British period, since the administration of Mughals. So अधिकांश लोक दारिद्र्य सीमारेखा तले बसवास करिथांती. Those people live below the poverty line in our country. So poverty line, how can we define the poverty situation or poverty line? There is one line. That poverty line we can define taking the account of urban area poverty and rural area poverty. So as per the Planning Commission of India, what category of people? Those who are live below the poverty line. If the people that those are unable to get 2100 calorie per day per individual or per persons in urban area,
and 2400 calories food intake or nutrition per day per person in rural area, we can say they are resides below the poverty line. So এই ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଅର୍ଥ ଭାରତର ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦୈନିକ ପର ଡେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2100 କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ୍ ଇନଟେକ୍ ବା ବାଲାନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସୋ ଏ ଗଲା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା। ସେଇଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର ଡେ ପର ପର୍ସନ 2400 କ୍ୟାଲୋରି ଫୁଡ୍ ଇନଟେକ୍ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଦେ ଆର୍ ରିସାଇଡିଂ ବିଲୋ ଦି ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍। ତାହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ 2400 କ୍ୟାଲୋରି ଯଦି ଫୁଡ୍ ଇନଟେକ୍ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଦୈନିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। Hence in this context we can clarify that in India particularly we will find that absolute poverty, চরম দারিদ্র্য অবস্থা, those are some people unable to get daily food intakes like food, clothing and shelter. ଏଭଳି ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ unable to fulfill the necessity or the necessary wants like food, clothing, shelter. ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶରେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ after independence, after the departure of the Britishers, that to some extent the poverty relaxed and declined. So this poverty situation prevails particularly in a rural area, like the small farmers, marginal farmers and the artisans, weavers, ବୁଣାକାର କଳାକାର ଏବଂ marginal farmers, landless laborers ଏଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ flood affected area, drought prone area ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। So the real meaning of agrarian stated briefly is that pertaining to cultivated or agricultural land or tenure related to cultivated land or its management and distribution. The term agrarianism refers to movement for the division of a land, changes which would improve economic status of the farmers, methods more or less controlled. ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିସ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, କଲ୍ଟିଭେଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ and land tenurial system ଉପରେ ଆଧାରିତ। So agrarian class, what are sort of the problem faced? The relations includes attribute some of the qualification on agrarian movements or agrarian class like crop share। କିଭଳି ଆମର crop share କରାଯାଉଛି କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ and with the tenants of landlords, ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି କ୍ରପ ସେୟାର କରାଯାଉଛି ବା ଭାଗ କରାଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡଲି ଅନପେଡ୍ ଲେବରର୍ସ ଅଫ ଦି ଟେନାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲେବରର୍ସ, ଅନପେଡ୍ ଲେବରର୍ସ ଅଫ ଦି ଟେନାଣ୍ଟସ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲେବର୍ସ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟ ହତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଚାଷୀ ବା ଜମି ମାଲିକ ଠାରୁ ପାଇନଥାନ୍ତି, justice ପାଇନଥାନ୍ତି। So they run after grief, despair and pain. କୋଉମାନେ? the farmers. Thirdly, non market wages, wage ଠିକ ଭାବରେ ନଥାଏ। bonded laborers, bonded labor, ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଖଟିଥାନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। rights over the women of inferior tenants,
ଏଇଭଳି ଅନେକ agrarian class ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। So agrarian class in India, the situation what it prevails nowadays, the agrarian class composition varies depending upon social and economic and geographic, political and administrative conditions of the region. So agrarian composition ଟା ବା ଚାଷବାସ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ତାର ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦି ରିଜିଅନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ନେଚର ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ varies from place to place and even at one and the same place depending upon the productivity of the region, large because of the type of soil, availability of the water, adoption of improved agricultural practices, development of communication, integration of market forces, political and administrative setup. এই অনুসারে ଆମ ଦେଶରେ agrarian class କୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। So today the penetration of market process and adoption of technology are considered very important factors for shaping agrarian composition. वर्तमान जुगरे modernization जुगरे the adoption of the modern technology in agricultural sector is considered a very important factor shaping the agrarian system and composition. So agrarian class in feudalism agrarian system, feudalism रे एवं कैपिटलिज्म रे किभली agrarian क्लास सब सृष्टि होता है बा फेउडालिज्म रे चाषी माने किभली हैरान होइथांती बा हमर जमी मालिक माने किभली बेनिफिटेड होइथांती। फेउडालिस्ट आर द फैमिली जनरली ओइंग और कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल लार्ज एरिया फॉर लैंड। फेउडाल क्लास रे किछि लोकंग पाखरे प्रचुर परिमाण रे चाष जमी रेवेन्यू लैंड गुडिक तांका हाथ रे कंट्रोल थाए, बट दे डू नॉट एंगेज इन कल्टिवेशन डायरेक्टली। किंतु सेमाने वास्तव रे चाषबास करि नथांती। तांका पाखरे फेउडालिज्म गोष्ठी मानक पाखरे प्रचुर परिमाण रे रेवेन्यू लैंड गुडिक बा क्रॉपिंग लैंड गुडिक एग्रीकल्चरल फार्म लैंड गुडिक तांका हाथ रे थाए, किंतु सेमाने वास्तव रे चाषबास करि नथांती। दे लीज वन ऑफ देयर लैंड्स टू टेनेंट्स हु कल्टिवेट दोज लैंड्स। प्रकृत रे टेनेंट मानकु जे प्रकृत चाषी तांकु सेमाने चाष करिबा पई देई थांती। Their principal source of income from land comprises the rents paid by the tenants. Tenants माने केवल रेंट देबे, रेवेन्यू देबे, किंतु सेमाने सबु अख्तियार करि नै जानती जो माने जमी मालिक। So money rent is generally a fixed amount, किछि परिमाण रे रेंट देबे। तापर से बळी peasant class अछंती। Peasant class is generally identified with self-cultivating through family laborers, members, subsistence and small farmers cultivated household. जो माने कि peasant class बोली कहा जाए। प्रकृत रे चाषी माने सेमाने सबु तांकर परिवार सदस्य पिला माने एवं महिला माने कृषि क्षेत्र रे काम करिगिरी जीविका निर्वाह करिथांती। Again, agrarian classes in capitalistic system, कैपिटलिस्टिक फेउडालिज्म रे हम देखिले जमी मालिक जने किंतु चाषी प्रकृत रे चाष करूची से किछि पाउ नै, रेंट दे दे चलीची अल्प किंचित मात्रा रे शस्य से पाइताय फेउडालिज्म क्लास रे। किंतु कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर सिस्टम रे फार्मर्स ओइंग और कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल लैंड होल्डिंग। फार्मर्स माने प्रकृत रे बड़ बड़ चाष जमी को तांका हाथ रे रखितांती, who get their lands cultivated with the help of wage laborers under their own directions and delegated supervision can be described as capitalistic farmers. Capital पूंजीवादी चाषी माने पूंजीवादी शासन व्यवस्था रे पूंजीवादी चाषी माने ही सेमान निज निर्देश निज सिस्टम निज प्लेटफॉर्म अनुसार सेमान सब चाषबास सब करिथांती एवं जहा आय होए सेमान सब तांकर ठीक बाटरे व्यवहार करिथांती। So एथिरे कोन हुए ए मूवमेंट रे सब बेले मूवमेंट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज। जे कोन से आंदोलन हो मूवमेंट हो ता भीतर से माने देखि थांती गोटे जे कोन से मूवमेंट हो देयर इज ए रेडिकल चेंज विल प्रिवाइल इवन इन द सेंस ऑफ एन एंटायरली न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। गोटा नुवा सामाजिक वैप्लविक अर्थनैतिक गोटा परिवर्तन घटी थाए, गोटा जे कोन से आंदोलन सृष्टि होई थाए।
कृषि क्षेत्र बा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो बा स्टूडेंट रिवोल्यूशन हो बा फार्मर्स रिवोल्यूशन हो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो जे कौन गोटा रिवोल्यूशन होता है प्रत्येक थे गोटे चेंज परिवर्तन होता है आउ कौन होता है ए मूवमेंट पर्टिकुलरली द वन व्हिच हैज फार रीचिंग implication for change must develop and sooner or later a comprehensive ideology गोटे comprehensive ideology अनुसार गोटे दीर्घकालीन परिवर्तन होता है एंड से परिवर्तन टा निश्चित भाव में उन्नयन आड़ को गति करी थाए डेवलपमेंटल एम आड़ को गति करी थाए जे कौन से आंदोलन घटी थाए आंदोलन एक्शन रिएक्शन फल गोटा नुआ ढांचा आसी पहुंची थाए सो अगेन मूवमेंट यूजुअली हैव ए स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग देयर एम्स प्रत्येक मूवमेंट रे गोटे एम थाए टार्गेट थाए किछि गोटा टार्गेट हासिल करबा पई जे कौन सी रिवोल्यूशन बा मूवमेंट करा जाय थाए जे कौन सी सेक्टर रे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो बा पॉलिटिकल सेक्टर हो बा कृषि क्षेत्र हो जे कौन सी क्षेत्र रे जो परिवर्तन होता है ताहा निश्चित भाव विकास आड़ को गति करी थाए सो मूवमेंट एंड चेंज द framework of the analysis of movement change we can now arrive at a framework for analysis by which we can assess more precisely about the movement about the change the nature and quality of movement so जो परिवर्तन बा विकास होई थाए ए जो मूवमेंट हला तार को भली मूवमेंट नेचर की भली भल आड़ को ना मंद आड़ को ना जनकर स्वार्थ पाई ना सामूहिक स्वार्थ हासिल करबा पाई सो दैट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ मूवमेंट सेकेंडली द चेंज इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट जो मूवमेंट है थाए संपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन घटी थाए गोटा रिवोल्यूशनात्मक मूवमेंट करा जाय थाए this means the movement is strategy and tactics it may use movement सब बेले प्रत्येक आंदोलन गुड़ी को विभिन्न कला कौशल प्लान्ड वे रे होई थाए सेही प्लान्ड वे रे कौशल अप्लाई करे स्ट्रेटजी निया जाय थाए कोन पई करबा काई के हबो जे कोन आंदोलन सो मूवमेंट कैपिटलिस्टिक कंट्राडिक्शन रे the conceptual understanding of the process of change in agrarian system in capitalistic system most agrarian mobilization arise out of contradiction embedded in the feudalistic structure of agrarian society जेतबे contradiction विरोधी देखा जाय थाए परस्पर मध्य रे गोष्ठी मध्य रे सेतेबेले कैपिटलिस्टिक मूवमेंट और फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट होई थाए सो से भली फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मूवमेंट रे आ कोन सेकंड इंपोर्टेंट agrarian mobilization कौन होता है that is contradiction emerging from capitalistic penetrations in agriculture कृषि क्षेत्र रे contradiction होता है जोटा कि हमर दखलकारी मानक मध्य रे जो को माने चाष जमी को अधिक परिमाण दखल करिसंती को मान पाकर नाही से क्षेत्र मध्य contradiction सृष्टि होता है एवं मूवमेंट बा हमर आंदोलन देखा जायता again movement arising out of a feudality contradiction after 1950 feudalistic system रे 1950 परे परे कौन सब देखा जायछि ग्रामदान some movements arise out of the feudality contradiction mainly because of the implementation of the land reforms and was tragedy and their progress was hampered by feudalistic अनेक जो प्रोग्रेस होई थाए तार हैम्पर बा डिडक्शन घटी थाए तार कौन सी डेवलपमेंट हे न थाए सेते बेले फ्यूडलिस्टिक कंट्राडिक्शन स्टार्ट हेले रिवोल्यूशन स्टार्ट हला एवं आफ्टर 1950 कोन बळी सब करा जायछि मूवमेंट सब हेछि विभिन्न देश रे एवं आम देश रे ग्रामदान इन 1952 ये गोटे मूवमेंट हेथला आम देश रे ग्रामदान with the coming of independence and after the death of Mahatma Gandhi on the anvil of Tekbhag and Telangana movement ramar heitala Bhudan movement and Gramadan movements as alternatives to the Tekbhag and Telangana movements. Gramadan and Bhudan were extensions of Gandhi's concepts
for the replacement of private ownership of property to trusteeship, particularly in the case of land. भूमि क्षेत्र रे हमर ग्राम दान माध्यम रे महात्मा गांधी जो ड्रीम थिला स्वप्न थिला जे प्रकृत रे चाषी के पाइबो हकदार होची चाष जमी पाइबो तेणु करी समग्र चाष जमी को गोटे गाँ ट्रस्टी आकार रे ताकू रखा जाउथिला एवं प्रकृत चाषी मानक मध्य रे से गुडिक बंटन करा जाउथिला सेथि पई हमर बाहरी थिले कि आचार्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट began in Nagaland firstly and the hotbed of the Telangana movement. Vinoba Bhave asked the landed families to consider the landless of their one additional urban children and to go to gift their shares to them. In the next stage, landowners in the village were requested to gift their entire land in the village. Vinoba Bhave, Acharya Vinoba Bhave, जे भूदान मूवमेंट रे नागालैंड रे जो स्टार्ट करथिले जे समग्र जमी गुडी को जो मानकर अधिका परिमाण चाष जमी अछि से माने ग्राम सभा को दान करंतु एंड एहा गोटे गिफ्ट भरी एंटायर लैंड विल एक्वायर्ड बाय द विलेज पीपल समग्र गां गंडा लोक मान समग्र चाष जमी रो अधिकारी हेबे द विलेज देन सेट अबाउट क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशन सर्वोदय सहयोग समिति दैट मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द ग्राम सभा विलेज असेंबली जोटा कहती ये सब गठन करा गला डिसीजंस इन्वॉल्व कलेक्टिव फार्मिंग ऑन 8 एकर्स ऑफ ग्रामदान लैंड तो 18 एकर थिबा ग्रामदान लैंड ग्राम सभा बा ग्रामदान लैंड रे समस्त भाग होइकरी चाषबास करिवे बोली भूदान विनोबा भावेଙ୍କ भूदान मूवमेंट रे तांकर मुख्य एस्पेक्ट थिला तापर सेही भली आंदोलन कराइथला 1950 परे नक्सलबारी एंड नक्सलाइट मूवमेंट ड्यूरिंग 1967 ऑनवर्ड्स 1967 मसिया परे परे मध्य नक्सलबारी बा नक्सलाइट आंदोलन हेतला एई हमर चाषबास क्षेत्र रे नक्सलबारी मूवमेंट इन द सिलीगुड़ी सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट व्हिच मैच्योर्ड इन 1967 नक्सलाइट मूवमेंट प्रथमे आरंभ होइतला हमर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रो सिलीगुड़ी रे प्रथम स्टार्ट हेतला ए विलेज इन नॉर्थ बंगाल रे इट वाज ए कंटिन्यूएशन of prolonged struggle by the peasant association against feudal exploitation and subversion of land reforms जो feudal माने exploit करूथिले चासी माननकू बा शोषण करूथिले तांको एग्नेस्ट रे नक्सलबारी बा नक्सलाइट आंदोलन सब करा जाउथिला एवं they are engaged in relentlessly struggle against the landlords class they would not allow them to evict tenants केही आउ रेंट दबा पई राजी हेला नाही एवं जबरदस्त चाषबास मध्य आरंभ कर देथिले नक्सलबारी आंदोलन रे आफ्टर 1950 तो एही भली सब अनेक प्रकार हम देशर मध्य आंदोलन चाली चाष जमी ऊपर सो रिसेंट पिजान मूवमेंट्स इन ओडिशा ओडिशा रे केवली सब पिजान मूवमेंट सब देखा जाउची वर्तमान कृषक आंदोलन सारा भारत रे विशेष करी पंजाब हरियाणा मानकर दिल्ली रे जाइकरी रोड ब्लॉक करवा इत्यादि सब देखा जाउची कारण उपयुक्त मार्केट प्राइस से मानको दिया जाउ नाही तो से बड़ी ओडिशा रे कोन सब थिला द क्वेश्चन ऑफ अंडर रेट्स has been before for a long but the origin of this protest is quite difficult to trace according to Surendra Sahu of the Jharsuguda district nowadays आंचलिक कृषक संगठन गोटे आंचलिक कृषक संगठन करा जायतिला सुरेंद्र साहू को माध्यम रे रीजनल पिजेंट ऑर्गेनाइजेशन तक हुआ जाए द प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन नवंबर 2000 इन झारसुगुड़ा इनिशियली द डिस्ट्रिक्ट वाज अफेक्टेड बाय famine ड्यूरिंग द ईयर 2000-2001 विराट दुर्भिक्ष पड़ी जायतिला झारसुगुड़ा रे 2000-2001 मध्य रे तो झारसुगुड़ा रे सुरेंद्र साहू को द्वारा गोटे बड़ आंदोलन चाषी आंदोलन मध्य करा जायतिला सो कौन तादर सो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन थिला एग्रीमेंट द सेल एंड परचेज ऑफ पैडी वाज टू बी अफेक्टेड इन द रेगुलेटरी मार्केट कमिटी आरएमसी जोटा को कहा जाए रेगुलेटेड मार्केटिंग कमिटी प्रकृत उपयुक्त प्राइस रे
सरकार चाषी मानक ठारू शस्य किनिबा दरकार. Then next important point in the agreement was regarding payments. चाषी मानक एग्रीमेंट करा जिवो एई प्राइस रे दिया जिवो किंतु दाम प्रदान कला बेलकू असुविधा फेस करिथांती चाषी माने. तेणु सेतिरे मध्ये एग्रीमेंट करा जायतिला जोटा हमर झारसुगुड़ा आंदोलन करा जायतिला ड्यूरिंग 2000 मसिया जो मरुड़ी पड़ीथिला से समय सरकार को प्रोटेस्ट करिथिले झारसुगुड़ावासी. सो रिसेंट पिजन मूवमेंट्स इन कर्नाटक से भली सुइसाइडल केस ओडिशा मध्ये से भली सुइसाइडल केस चाषी आत्महत्या ये सब विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम समस्या सब देखा जाई थाए. तेणु आकु सब ब्रेक करबा पई हेले अनेक समय रे आंदोलन तथा अवलंबन करिथांती चाषी माने. सो लैंड रिफॉर्म्स इन थ्योरी अछि दैट लैंड रिफॉर्म्स हमर that after the departure of the Britishers from our country, that there was Zamindar system, Mahalwar and Raitar system, when government of India implemented first 5-year plan during 1951, government take drastic steps on land reforms because due to shortage, scarcity of the food grains and over explosion of the population in our country, land reform system as undertaken by the government of India during first and second 5-year plan. जेतेबेले भारत स्वाधीनता हला बिलात सरकार मान पलायन गला परे परे भारत रे द्रुत जनसंख्या वृद्धि पाइबा द्वारा खाद्य समस्या देखा जाइथिला एवं अधिक परिमाण रे शस्य किभली उत्पादन करा जिवो सेति पई सरकार लैंड रिफॉर्म को आपणाइथिले. लैंड रिफॉर्म पई सरकार स्टेप नैथिले कहीं कि ना अनेक ब्रिटिश सरकार पलायन परे परे जो मान सब जमींदार मान थिले तांका हाथ रे चाष जमी गुडी को सब रही जाइथिला. प्रकृत चाषी जी तांका पाखरे चाष जमी नथिले. बेखना बा फूड प्रोडक्शन के को माने करे प्रकृत चाषी जो माने से नहीं करि परिबे जमींदार माने करि परिबेनी. सो दैट इज व्हाई वन ऑफ द कॉज ड्यू टू a huge quantity of land, agricultural land, as under control of the zamindar. So that's food production declined during that period. So government take drastic steps and started land reform. Since independent, objective of land reform policy have been followed as restructuring agrarian relations to achieve an egalitarian social structure. रिस्ट्रक्चर कले agrarian सिस्टम को egalitarian स्ट्रक्चर बा सोशल स्ट्रक्चर रे ताको परिवर्तन करिथिले. सेकेंडली एलिमिनेटिंग एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशन शोषणात्मक मनोवृत्ति जो जमींदार मानकर थिला ताको मध्य कंट्रोल करा गला जेतला भारत स्वाधीनता हासिल कला. सो नेक्स्ट रियलाइजिंग द एज ओल्ड गोल ऑफ लैंड टू द टिलर, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इन्फ्यूजिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी. सर देश रे समानता जस्टिस मेंटेन करबा पई सरकार एई सब ऑब्जेक्टिव सब आगे आखिया को नेले एवं इगैलिटेरियन सोशल सिस्टम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स अप्लाइड. सो लैंड रिफॉर्म्स as actually it is an arrangement by which farmers hold or control land. लैंड रिफॉर्म एक्चुअल मीनिंग कोन ना यह होची गोटे अरेंजमेंट by which farmers hold or control land and the conditions that must be observed for its use and occupancy. किए ऑक्युपाई करिवो जमींदार करिवे ना प्रकृत रे फार्मर्स माने करिवे. that was eradicated by that obstacles and dilemma eradicated by the help of the land reform system. सरकार जो लैंड रिफॉर्म कले इगैलिटेरियन सिस्टम को परिवर्तन कले सेटा हमर प्रकृत रे फार्मर माने सेही माने होल्ड करिवे लैंड एंड कंट्रोल करिवे एवं प्रचुर चाषबास करिवे हम देशरु खाद्य समस्या दूर होई परिबो. सो लैंड रिफॉर्म्स आर विजुअलाइज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. लैंड रिफॉर्म माध्यम रे सामाजिक न्याय ही प्रतिष्ठा करा गला as they seek to do away with exploitative relationship characterized by sharp class division between rich
and land owing classes and impoverished peasants with no security of tenure. It is against the concentration of land holdings in the hands of the few non-cultivating owners through imposition of ceiling in the size of holding. सरकार यही समय न्याय बा आईन प्रणयन कले गोटा सीलिंग चाष जमी का पाखरे केते रहिबो गोटा सीमा निर्धारण कले ताको जाय सीलिंग लैंड रो सीलिंग निर्धारण कले जा फल रे जस्टिस आरंभ हो गला एवं सही पंचवार्षिक योजना परे परे सरकार जस्टिस न्याय प्रदान कले प्रकृत चाषी माने के सेति पय कोन करा गला लैंड रिफॉर्म रे सेटलमेंट सब करा गला सेटलमेंट permanent settlement system for assessing land revenue was first introduced by the British in Banaras during 1773. प्रथम आमर परमानेंट सेटलमेंट लैंड सेटलमेंट सब करा गला ब्रिटिशर मानक द्वारा 1773 रे सेही प्रोसीजर सेही लैंड रिफॉर्म एक्ट सेटलमेंट एक्ट गुडी को भारत सरकार मध्य इंप्लीमेंट कले आफ्टर इंडिपेंडेंस तापर हेतला कोटा ना द बेंगल परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशंस ड्यूरिंग 1793 and was passed by Lord Cornwallis मध्य से समय रे एटा को इंप्लीमेंट करथले 1793 रे बेंगल परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. So the zamindar system was registered as a number of places. As a result, the other variants that came up at different places were as follows: the Malgujari settlement, Jagirdari settlement, Roytari settlement system, and Mahalwari settlement system. এই ভଳି ସବୁ বিভিন্ন ପ୍ରକାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା. ତାପରେ details proposal on land reforms were set out in the second plan. Our second 5-year plan ने detail land reform settlement व्यवस्था प्रचलन करागला. So detailed proposals on land reforms during the second plan as like the abolition of intermediaries. मध्यस्थतागिरी को उच्छेद करागला. Abolition of intermediaries, tenancy reform सरकार हाथ को नेले आईनी प्रणयन कले, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग जमीर सीमा निर्धारण कले, बहु लोक पाखरे केते चाष जमी रही पारिबो. जो जमींदार मानक पाखरे अधिका परिमाण रे ब्रिटिश सरकारक अमलरु रखिथिले अधिका परिमाण र जमी ताकू सरकार छड़ै नेले एवं भूदान मूवमेंट समय रे मध्य अनेक लोक चाष जमी दान करिथिले. So selling on land holding gala. Next होची agrarian reorganization including consolidation of holding चकबंदीकरण व्यवस्था मध्य सब करा जायथिला. तापरे 8th 5-year plan during 1992 to 97 अष्टम पंचवार्षिक योजना जेतबे प्रणयन करा गला 1992 रु 97 मध्य रे stressed that landlessness is a root cause of rural poverty. देखा गला जे जो माने लैंडलेसनेस आम देश रे ए पर्यंत मध्य अनेक चाषी अछंती जा पाखरे प्रकृत रे चाष जमी नाही. सो सेमानु को कह जाय लैंडलेस फार्मर्स एंड लाइक मार्जिनल फार्मर्स. ए लैंडलेस फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स suffers a lot and they resides below the poverty line. सेमाने सबु बेले दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करिथांती. So the plan set 7 objectives. Some of the important objectives undertaken by the 8th 5-year plan, like restructuring of agrarian relations to achieve egalitarian social structure, and secondly, elimination of exploitation in land relations. Exploitation शोषण विरुद्ध रे आईनी मध्य प्रणयन कराला 8th 5-year plan रे. Actualization of goals of land to the tiller. Next, improvement of socio-economic condition of the rural poor. रूरल पुअर ग्रामांचल गरीब लोक मानकर सोशल इंप्रूवमेंट मध्य करा गला. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एवं प्रोडक्शन उत्पादन को वृद्धि करा गला. नेक्स्ट थिला फैसिलिटेटिंग लैंड बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पुअर. ग्रेटर मेजर ऑफ इक्वालिटी इन लोकल इंस्टीट्यूशन. लोकल इंस्टीट्यूशन मानक समानता सब अधिकार दिया गला. नेक्स्ट, keeping in this view
द नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 मसीह प्रणयन करागला जातीय कृषि नीति ताको कहा जाए 2000 मसीह and gave emphasis on the some of the important issues like consolidation of holding all over the country on the pattern of northwestern states भली चक्कबंदी सब करागला चक्कबंदीकरण कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग नेक्स्ट थिला रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ऑफ सरप्लस लैंड बड़का चाष जमी जो गुडा आबाद जमी गुडा रही चाषी मानू प्रकृत चाषी मानू हस्तांतर करागला तापर थर्ड रे टेनेंसी रिफॉर्म करागला तापर अपडेटिंग इंप्रूवमेंट एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड सब धीरे धीरे आरंभ करागला हमर 2000 मसीहा बेलू नुआ जो नूतन कृषि नीति जोटा प्रणयन करागला ड्यूरिंग 2001 से सब अवलंबन करागला तापर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट रे हमर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नेक्स्ट थिला हमर रेगुलेशन ऑफ रेंट कन्फर्मेंट्स एंड ऑफ ओनरशिप ऑफ राइट एगडा ऊपर सरकार दृष्टि देले सो हमर जोटा सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग जोड़ा गला कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रे जोड़ा चक्कबंदीकरण करा गला चक्कबंदी द्वारा अनेक लाभप्रद हला चाषी मानकु कि भली सपोज गोटिए चाष जमी ए एंड बी दी जन चाषी ए पाखरे गोटिए ता घर पाखरे थिबा चाष जमी खंडे आउ खंडे तार रहउची बहुत डिस्टेंस रे तेणु एठी चाष करिबा बा घर पाखरे जो चाष प्लॉट टी अछि एठी चाष करी पुणी डिस्टेंस प्लेस रे चाष करले ताकू समय सापेक्ष हबो समय ताकू दरकार पड़िबो एवं उभय चाष प्लॉट टिकू रक्षणाबेक्षण मध्य दरकार पड़ी थाए तेणु उभय को आट ए टाइम रक्षणाबेक्षण करबा कष्ट होई पड़े अच्छा बी रो चाष जमी ए पाखरे अछि खंडे एवं आउ खंडे डिस्टेंस प्लेस अछि तेणु उभय को जेतेबेले सब्स्टिट्यूट करा जाए प्रतिबदल करा जाए ए पाख जमी बी पाख जमी को दिया जिवो एवं बी पाख जमी ए पाख जमी को दिया जिवो परस्पर बेनिफिटेड हेले सो याकू चक्कबंदीकरण कहा जाए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ए कंसोलिडेशन माध्यम रे गोटे जने चाषी गोटे निर्दिष्ट प्लॉट उपरे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करि परिबो जमीर रक्षणाबेक्षण करि परिबो एवं इरिगेशन फैसिलिटी से आरंभ करि परिबो एवं प्रोडक्शन अधिका होय समय मध्य बहुत बंची थाए सेति पई हमर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग सरकार आरंभ कले सो कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड होल्डिंग helps in improving the agricultural production as well as in providing common services to small holders जो फ्रैगमेंटेशन है कि रही चारियाडे चाष जमी विच्छेदित होगी रही से सबको कलेक्शन करा जाए परस्पर पाख लोक को पाख जमी दि जाए कि अन्य जमी गुड़िक नेक्स्ट लोक को दि जाए से कौन हम उभय परस्पर बेनिफिटेड हेबे एवं अधिका प्रोडक्शन हम वी कैन eradicate the poverty situation automatically so consolidation of holding जो आईन प्रणयन करा जायतला हेलो ऑडियो आसुची कि समस्त आसुची सुन मझे मझे एपर्यंत पिला माने कन्फर्म हे परना दिने क्लास होची कि ना नाही बा काउंसलिंग क्लास होची कि ना नाही पिला माने मझे मझे फोन कर दोछंती कोन करबो को ए पर्यंत हेलो सुबुची हां सर हां सुबुची एगोटा फोन ए पिलाटी कर देला इग्नो पिला हमर ओरे इग्नो पिला फोन कर देला ए पर्यंत से जानि परनी जे क्लास होची कि ना नाही कोन करबो हां सर ए ओळे सब प्रॉब्लम होची क्लास चलथला बेले बा काउंसलिंग
कन्फरेन्स मत आज 4टा 5टा फोन है तो ऑडियो आसुची हेलो फोन पड़ी वॉइस क्लियर है हेलो सुशांत वॉइस क्लियर होची हेलो सर होची सर ओके 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 so let us listen again green revolution सबुज विप्लव आम देश रे कृषि रो विकास करबा पई green revolution started during 1960s. The institutional approach mainly typified by land reforms and changing agrarian relations. Agrarian relations were the strategy adopted way back in the mid-50s. This strategy outlined units and which we hope have a work through better agricultural production as a result of a technological approach to agricultural development popularly known as green revolution, sabuja viplava, technological approach to agricultural development, popularly known as green revolution. The green revolution, which began in the mid-1960s, is the name given to the first systematic attempt to increase agricultural production, particularly that of food grains in India and some other developing countries by applying new technology of cultivation. It is based on the biochemical innovations that include high yield variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides, insecticides, and using the modern technology like power tiller, tractor, sowing machine, cutting machine, एगुड़िक सब मॉडर्न फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन कृषि क्षेत्र रे करा जाई
ସବୁଜ ବିପ୍ଳବକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା। जो सबुज विप्लवर प्रभाव किंतु विशेष भाव में पड़ता खूब भल भाव में पड़ता भारतर पंजाब हरियाणा गुजरात एवं उत्तर प्रदेश सम पार्ट महाराष्ट्र मध्य प्रदेश किसी पार्ट यही राज्य मान पड़ता सबुज विप्लवर वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉल ऑन दी स्टेट्स दैट आल्सो the application of the modern technology, fertilizers, chemical fertilizers, pesticide, insecticides that have a very good impact to produce the wheat production, to produce maximum wheat food grains in Punjab, Haryana. Then, से अंचल में ऑयल सीड्स भरतपुर राजस्थान में गतकाली आम आलोचना करते जे राजस्थान भरतपुर अंचल में मस्टर्ड ऑयल सब चाष शस्य सब चाष करा जो आम सारा भारत को सप्लाई करूँ मस्टर्ड ऑयल सो दैट इज व्हाई द पर्टिकुलरली ग्रीन रिवोल्यूशन फॉल ऑन पंजाब हरियाणा एंड गुजरात महाराष्ट्र सम पार्ट एंड उत्तर प्रदेश सम पार्ट जो प्रचुर परिमाण में आम गहम प्रोडक्शन करा सबुज विप्लवर प्रभाव फल एत व्यतीत दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉल ऑन the states, the coastal districts of different states in India fall on the rice production. To apply the application of the modern HYV seeds, modern आधुनिक high yield variety of seeds बा अधिक अमलक्षम बिहन को प्रयोग करी प्रचुर परिमाण रे धान चाष मध्य करा जाउछि एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट कटक रे सिचुएटेड and improved technology in the form of new HYV of crops and a package of practice which consists of appropriate application of chemical fertilizers, pesticides and irrigation facilities which are necessary for the technology to be effective. जो टेक्नोलॉजी आमर इफेक्टिव हम बा जो परिमाण रे अधिका जलसेचित अंचल आम एभलिया शस्य प्रयोग करवा प्रचुर प्रोडक्शन हम एवं अण जलसेचित अंचल उच्चा पहाड़िया ढिपा जमी कम जलसेचन सुविधा थिबा हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स प्रयोग कर प्रचुर प्रोडक्शन करागला कम जलसेचन दरकार पड़े कारण आम देश में अनेक समय जलसेचन सुविधा ना तेणु अनेक अंचल से विहन सब प्रयोग करा धान प्रोडक्शन करा जो कम परिमाण जल दरकार पड़ता है सो यही आमर सबुज विप्लव ग्रीन रेवोल्यूशन सरकार आम देश में प्रचलन कला शस्य प्रोडक्शन प्रचुर परिमाण में हो पारि सो द बेसिक स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थिला कौन सब आगे कौशल थिला द गवर्नमेंट पॉलिसी वाज नाउ ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंजिंग द टेक्निकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन सब इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन The government focused after the Green Revolution 1960-66 that focused on the intensive methods of production. But that intensive methods of production provides the crop output throughout the year. गोटे छोटिया चाष जमी वर्ष तमाम आम चाष कर उत्पादन करवा जो धान चाष आम करा आंध्र प्रदेश खरीफ ऋतु कर आमर खराटी चाष करके धान प्रचुर प्रोडक्शन करुँच सो नेक्स्ट हूँ द न्यू टेक्नोलॉजी कंसिस्टेड एसेंशियली ऑफ ए पैकेज ऑफ इनपुट्स एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूड सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सो थर्ड द एम्फासिस वाज प्राइमरली ऑन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन्स नेक्स्ट गिविंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ assured water supply next the new technology and strategy also focused on increasing marketed surplus of food grains through price support and procurement operations एवं प्राइस सपोर्ट जो प्रचुर प्रोडक्शन ऑफ सरकार एफसीआई स्थापन कले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एफसीआई गोडाउन जोड़ा कहुच्छी आमर शस्य भंडारगार जोड़ा सब निर्माण करा प्रचुर प्रोडक्शन हेले से शस्य को आम दीर्घ वर्ष बा दीर्घ दिन पर्यंत आम संचय कर आमर डेफिसिट समय सेल कर बजार को छाड़ी पार ये सब हूँ आमर सबुज विप्लव स्ट्राटेजी थिला सो ये वाईवी पैकेज
The crucial element in the HYV package was the seeds. प्रकृतर मंजी की seeds गुड़ाक important रहते HYV रे, which was typically a hybrid design to give much higher yields in response to the use of fertilizers. Some of the other characteristics of these new varieties were shorter maturing period, कम दिन रे किभली धान अमल होई परिबो एवं कम जलसेचन दरकार पडुथिबो ए सब होची हमर HYV पैकेज रो लक्षण बा फीचर्स गुड़िक तापर हमर सब कोन अछि डबल क्रॉपिंग सिस्टम द्वार्फा सिस्टम शॉर्टर पीरियड एंड कम पॉजिटिव रेस्पॉन्स टुवर्ड्स फर्टिलाइजर ओथरे अधिक सारा विष प्रयोग कले प्रचुर प्रोडक्शन होबो ओथरे कम परिमाण रो जलसेचन दरकार पड़िता है ए सब होची HYV पैकेज रो लक्षण सो द न्यू व्हीट सीड्स इंट्रोड्यूस्ड हम देश रे विदेश सु मेक्सिकन सीड्स बना जाइतला सीड्स गुड़िक ताको जे मेक्सिकन वेराइटी ऑफ नेमली दैट इज सोनोरा 64 लर्मा रोजो एगरा होची व्हीट रो HYV सीड्स गहम रे एगरा सब मेक्सिकन सीड जोड़ा कलेक्शन करा जाइतला हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स एवं HYV सीड्स फॉर राइस लाइक IR8 सोना जया हम सब जानि जंती एगरा सब एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपाइंस रे जोड़ा अछि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पृथ्वीर मुख्य धान गवेषणा केंद्र कोठी अछि ना फिलिपाइंस रे सेठी प्रचुर अधिक अमलक्षम धान बिहन सब सेठी नुआ नुआ वैज्ञानिक पद्धति रे सब सृष्टि करा जाय कम जलसेचन रे कोठी प्रचुर प्रोडक्शन है परिबो इत्यादि इत्यादि द HYV सीड्स वर डिजाइन्ड टू बी very responsive to fertilizer intake and so higher application of fertilizers were crucial for the success of the technology. जो टेक्नोलॉजी हमें व्यवहार करथिबा ए जो HYV शस्य माध्यम हमें प्रचुर प्रोडक्शन करि परिबा कम जलसेचन माध्यम रे एवं बहुत अधिक सारा विष कीटनाशक इत्यादि मध्य दरकार पड़ुथिबो सो ग्रीन रिवोल्यूशन द एप्लीकेशन कोन थिला uneven spread soil nutrient depletion आर प्रभाव सब कोन थिला soil nutrition depression घटिला एवं जोडा हमार आर्थ वर्म हम जानछन जिया जोडा कहंती अनेक उपकारी कीटाणु गुड़िक माटी रे जो माने थांती जिया अन्य कीटाणु ए गुड़िक सब वंश समूले ध्वंस पाइला वर्तमान हमें दिबा हम चाष जमी रे बिलबाड़ी रे गाँ अञ्चल देखिबा आर्थ वर्म स्पेसीज देखा जाउ नाती आर्थ वर्म जोडा जिया माटी की ओलट पालट करती वायु संप्रसारण करिथांती एवं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस यदि आर्थवर्म चाष जमी रे अधिक परिमाण रे एवं विभिन्न कीटाणु थांती ताले सेमाने प्रोडक्टिविटी ता बढ़ाई थांती फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस हमर ए जो एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स द्वारा कोन हला हमर से कीटनाशक से जो जिया वंश विभिन्न कीटाणु सब उपकारी कीटाणु जिया मानकर स्पेसीज वंश समूले ध्वंस हो गलानी नेक्स्ट थिला डिक्लाइनिंग टोटल फैक्टरी प्रोडक्टिविटी वाटर मैनेजमेंट कंसर्न्स वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम देखा गलानी पेस्ट प्रॉब्लम सब देखा जाउते ए बोल सब विभिन्न प्रकार तार नेगेटिव इंपैक्ट मध्य हमर आर थिला कार ना ग्रीन रिवोल्यूशन तो ए गुडी को सब प्रॉब्लम को किबे सॉल्व करा जाय पारिबो एग्रीकल्चरल एस्टिमेशन तापरे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर द रूरल पीपल डिफरेंट अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज कौन सब थिला एक्सटेंशन सर्विसेज द जनरल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अप्रोच द कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच द ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच द पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन अप्रोच द प्रोजेक्ट अप्रोच द फार्मिंग सिस्टम अप्रोच द कॉस्ट शेयरिंग अप्रोच द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये सब कृषि विकास पाई आम देश में क्रॉप प्रोडक्शन पाई ये सब बेनिफिट सब चाषी मान को रूरल अंचल सब जोगे दिगला शिक्षा ट्रेनिंग एवं एग्रीकल्चरल जनरल टेक्निक कमोडिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच कौ विहन किभली कौ समय प्रयोग करेंगे प्रचुर प्रोडक्शन हम द प्रोजेक्ट अप्रोच सरकार हाथ को नहीं एगुरा सब एक्सटेंशन सिस्टम सब आम देश में प्रचलन करागला एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर सब प्रचलन करा जायछला
रिसर्च इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विसेज एबे सब कोन सब करा जायछि सपोर्ट द एनजीओस एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनजीओ मानकु मध्य सब विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग दिया जाउछि जो माने कि चाषी मानकु सचेतना करी विभिन्न प्रकार हमर फल बगीचा स्थापन करबा एवं आलायड चाषबास करबा लाइक पशुपालन करबा गाई छेली मेंढा एवं कुकुड़ा बतक पालन करबा आलायड एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर एवं विभिन्न प्रकार फल मूल चाष करबा ये सब ऊपर एनजीओ मानक सब ट्रेनिंग दिया जाउछि से माने गछर चारा रोपण इत्यादि सब करे होउछन्ति चाषी मानक नेक्स्ट स्पेशल प्रोग्राम रिलेटेड टू वुमेन इन एग्रीकल्चर महिला मानक मध्य आधरे इन्वॉल्वमेंट करा जाउछि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी हमर जोटा कहले शॉर्ट टर्म आत्मा आत्मा गोटा एनजीओ अछि नेशनल इंटरनेशनल बेसिस रे सो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा भारत सरकार मध्य प्रचलन करूछन्ति as a part of national agricultural technology project is आत्मा foreign aid मध्य आधे को आसी थाए so internationally it is also linked and promotion of group approach including self help group SSG group मान मध्य आधे involve करा जाउछि next increasing the role of a private and NGO sector promotion of a para extension workers increase use of a modern information and communication technology वर्तमान सब information communication technology मध्य प्रयोग करा जाउछि हमर सारा विश्व वर्तमान सब विभिन्न टेक्निकल वे रे ऊपर सब एयर सब स्प्रे करा जाउछि चाष जमीन मान करे ए सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर कॉर्नफील्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्री क्लीनिंग्स एग्रीकल्चरल क्लीनिंग्स माध्यम वर्तमान सब एस्टैब्लिश हेलानी तापर होछि कोन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन एक्सटेंशन सर्विस कोन सब प्रॉब्लम प्रत्येक जोटा नुआ इम्प्लीमेंटेशन करा जाए तार अनेक प्रॉब्लम्स ड्रॉबैक्स मध्य थाए लाइक फर्स्ट वन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स ड्यू टू लेस अवेयरनेस चाषी माने पार्टिसिपेशन करूना ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस चाषी मानकर सचेतना नथिबारु एई सब ट्रेनिंग बा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन किबोडी करा दिबो इत्यादि ए चाषी मान सब पार्टिसिपेशन करूना टिकल डाउन अप्रोच एवं विभिन्न प्रकार अप्रोच थिबारु दे आर इन पजल्स बिकॉज द फार्मर्स आर पर्टिकुलरली इन इंडिया आर इलिटरेट मैक्सिमम फार्मर्स सो दैट इज व्हाई दे आर इन पजल द लैक ऑफ अटेंशन टू फार्मिंग चाषबास करबा पई आ काहरी मोटिवेशन आसु नाही वर्तमान सिचुएशन ओडिसा तुम सब जानथबा कोनटा विषय आलोचना करबा सो चाष जमी वर्तमान गोचर होगी पड़ी रही आबाद जमी होगी पड़ी रही सो फाइनेंशियल क्राइसिस अनदर ऑब्स्टैकल्स म्युनिसिपैलिटी ऑफ और मल्टीपलिसिटी ऑफ एजेंसी एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग देम मल्टीपलिसिटी जो एजेंसी गुडी को अछि सेमानकर कोऑर्डिनेशन ठीक रे नाही लैक ऑफ मोटिवेशन मोरल अमंग एक्सटेंशन वर्कर्स पुअर इंपैक्ट पुअर इनपुट सपोर्ट्स ए गुडी को सब विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम देखा जाउ सो all these are the items are included in agricultural rural development in agrarian issue अच्छा लर्नर्स माने मु से कथा कहउतली जेते पहुंचीबो इमीडिएटली तुम रजिस्ट्रेशन टिके करि दियो रजिस्ट्रेशन नकला को डेली नेक्स्ट डे रे रिपोर्ट मो कति आसुची जे पिल माने कहीं लेस अटेंडेंस अछि तापर जेति के अटेंडेंस तुम माने सब करू प्रेजेंट रहउछ ता भीतर अनेक 2-5 जन खंड रजिस्ट्रेशन करूनाते एगरा उठिके निजे सचेतन हो बसुच गोटाई घंटा टाइम दउछ किछि सुनुछ एवं टॉपिक रो बैकग्राउंड ऊपर बा फ्रेमवर्क ऊपर जानुछ हां सब्जेक्ट सब कोन अछि इत्यादि इत्यादि तुम जदी आसिलो अटेंशन देलो प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन काई दिन रहइबो सेरा सब रेकॉर्ड रहउछ पूरा रीजनल सेंटर रे सेंट्रल दिल्ली सेंटर मान करे सु रजिस्ट्रेशन हैं सर रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन आप बोलते सर आपका वॉइस क्लियर सुने सर हेलो
होची ना अजित कुमार हेलो सावित्री सावित्री क्लियर होची ଆଜ୍ଞା ସାର୍ सावित्री क्लियर होची ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା। हां म या ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ସାର୍। बुझ पारला सर पुणी सेमती है वॉइस क्लियर କ୍ଲିୟର आसुनी ଆସିଲାନି ସାର୍। हेलो सर वॉइस क्लियर आसुनी हेलो सर आपनकर वॉइस क्लियर आसुनी हां क्लियर हैला वॉइस क्लियर हैला हेलो सर ଆଜ୍ଞା हला वॉइस क्लियर ହଁ ସାର୍ ଭଏସ୍ आज्ञा କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हां सुनो संज्ञा साहू जेतेबेले जो मोबाइल लो मझिरे जो मेसेज बॉक्स अछि ଆଜ୍ଞା जेतेबेले क्लास ऑन कलो सेतेबेले सेटा क्लिक करिक निजर रजिस्ट्रेशन नंबर जहा मागुतबो सेटा एंट्री करिवो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛा बुझि पारला ଆଜ୍ଞା ନେମ୍ ଆଜ୍ଞା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର समस्त ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚ। हाँ सब पिला करूचंती किंतु दी चार जण खंड करूनांतिनी प्रॉब्लम होची सेठी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ସାର୍ मझिरे जो ଜାଣିନଥିଲୁ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ। ହେଲା ଯେ ए ग्रुप रे तमर तो पिला हे गेलेन ना ग्रुप रे तम सब पचरा पचरी हेकि सब काम करबा आउ ଆଜ୍ଞା आज आज हाँ सुन आज गोटे पिला दी जण पिला मते गर्ल्स स्टूडेंट मते फोन करचंती सारे 25 तारिख ना कोन 25 तारिख सारे क्लास होबो तो बुझि परछ तो ଆଜ୍ଞା केते से सचेतन अछंती देखो ହୁଁ एडमिशन नहीं गले मते आज दिन 4 रे पचारछंती जे सारे 25 तारिख आज के तारिख हैला अजित कुमार अजित ଆଜି 25 ତାରିଖ ସାର୍। सर 25 तारीख से आज पचारछि सर आज 25 तारिख बुझि परछ तो आज ठारू सर क्लास होबार थिला आज आज्ञा हबो सर तो मु आ कोन कहिबी ता माने जो माने इग्नोर एडमिशन करछंती दे आर मोस्टली सीनियर स्टूडेंट एबा अनेक जॉब रे भी अछंती हां जॉब रे भी अनेक अछंती त मु तांको कोन कहि परिबी से माने मेल देखुना दिनी पाख नियरेस्ट रे इग्नो सेंटर को बुझु ना दिनी पिला मानकु पचारु ना दिनी संग साथी मान सहित कांटेक्ट करिया पय पड़िबो कारण वर्तमान कोविड 19 चलछि ना सबुआडे रेस्ट्रिक्शन अछि फोन माध्यम रे ओवर ऑनलाइन रे सारा सृष्टि चलछि वर्तमान सारा विश्व चली ऑनलाइन रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हैं माने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एजुकेशन सेक्टर को हेल्थ सेक्टर को बा बिजनेस सेक्टर को सब आड़े ऑनलाइन रे सब कारबार चलछि घरे बा हमें रहिगिरी हमें कोथरे अमेज़न नो बा अन्यान्य प्रोडक्ट्स सब मगौचंती इंटरनेट माध्यम रे सब तो ऑनलाइन सिस्टम हे गला आ सेति को देखिबोनी पचारले कोन हबो ए पर्यंत भी पिला पचारन क्लास हबो कि ना नाही कोन करिवे ओके ऑलराइट सो थैंक यू टू ऑल गुड इवनिंग थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर यू थैंक यू थैंक यू सर गुड नाइट। अच्छा सर सुना सर टिके हां सुना टिके हेलो हेलो लिसन टू मी ଆଜ୍ଞା सर तो आ गोटे इनफॉरमेशन कोन म कहथली रविवार दिन मोर टिके जरूरी काम रहउची 7 ରୁ 8ଟା पर्यंत बुझेला ना